अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू साज एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और मेरा सिर्फ इस रिकॉर्डिंग का मकसद सिर्फ ये है कि मैं पहले चैप्टर की रीडिंग करना चाहूँगी। और क्योंकि मुझे रिसेंटली आई जस्ट केम टू नो दैट कि देर आर सम स्टूडेंट्स who are visually impaired, but they do not find any site or any page or any video where they could listen the text. तो अब मैं इसी मकसद के लिए मैंने आज सिर्फ मेरा पर्पस यही है कि मैंने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है फॉर द फर्स्ट चैप्टर, और फिर बाद में हम इसको पूरे चैप्टर के साथ साथ फिर इनकी समरी भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि बच्चों ने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। When you are getting on in years, but not ill, of course, you get very sleepy at times, and the hour seems to pass like lazy cattle moving across a landscape. It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. For Chips, like some old sea captain, still measured time by the signals of the past, and well he might, for he lived at Mrs. Wickett's, just across the road from the school. He had been there more than a decade, ever since he finally gave up his mastership. And it was Brookfield far more than Greenwich time that both he and his landlady kept. Mrs. Wickett, Chips would sing out in that jerky, high pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner. Call over prep. And lights out, Chips always wound up the clock after that last bell. Then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas, and carried a detective novel to bed. Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of perceptions than any changeful entrance into another world. For his days and nights were equally full of dreaming. He was getting on in years, but not ill, of course. Indeed, as Dr. Marivelle said, there was really nothing the matter with him. My dear fellow, you are fitter than I am, Marivelle would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. You are past the age when people get these terrible diseases. You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. That is, of course, if you die at all, you are such a remarkable old boy that one never knows. But when Chips had a cold, or when east winds roared over the fenlands, Merrywell Marybelle would sometimes take Mrs. Wicked aside in the lobby and whisper, "Look after him, you know. His chest, it puts a strain on his heart. Nothing really wrong with him, only Anno Domini." But that's the most fatal complaint of all in the end. Anno Domini, by Jove, yes, born in 1848 and taken to the Great Exhibition as a toddling child, not many people still alive could boast a thing like that. Besides, Tips could even remember Brookfield in Weatherby's time, a phenomena that was. Weatherby had been an old man in those days. 1870, easy to remember because of the Franco-Prussian War. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury, which he hadn't liked because he had been ragged there a good deal. But Brookfield he had liked almost from the beginning. He remembered that day of his preliminary interview, sunny July with the air full of flower scents and the plick plock of cricket on the pitch.
Brookfield was playing Barnhurst, and one of the Barnhurst boys, a chubby little fellow, made a brilliant century. Queer that a thing like that should stay in the memory so clearly. Weatherby himself was very fatherly and courteous. He must have been ill then poor he must have been ill then, poor chap, for he died during the summer vacation. Before Chips began his first term, but the two had seen and spoken to each other. Anyway, Chips often thought, as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. Vivid, yes, it was a frequent picture in his mind. That summer day with the sunlight filtering through the dust in Weatherby's study. You are a young man, Mr. Chipping, and Brookfield in an old foundation. Youth and age often combine well. Give your enthusiasm to Brookfield, and Brookfield will give you something in return. And don't let anyone play tricks with you. I gather that discipline was not always your strong point at Melbury. Well, no, perhaps not, sir. Never mind, you are full young. It's largely a matter of experience. You have another chance here. Take up a firm attitude from the beginning. That's the secret of it. Perhaps it was. He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago. Big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. His youth, fresh complexioned, high collared, and side whiskered, odd fashions people followed in those days. At the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art, an exciting sport, and something of a tradition, decent little beggars, individually but as a mob, just pitiless and implacable. The sudden hush as he took his place at the desk on the dais, the scowl he assumed to cover his inward nervousness, the tall clock tickling, ticking behind him, and the smells of ink and varnish. The last blood red rays slanting in slabs through the stained glass windows. Someone dropped a desk lid. Quickly he must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. You there in the fifth row, you with the red hair, what's your name? Collie, sir. Very well, Collie. You have 100 lines, no trouble at all. After that, he had won his first round. And years later, when Collie was an alderman of the City of London and a baronet and various other things, he sent his son, also red haired, to Brookfield, and Chips would say, Collie, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then, and you deserve it now. How they all laughed, and how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in next Sunday's letter. And again, many years after that, there was an even better joke, for another collie had just arrived, son of the collie who was a son of the first collie, and Chips would say, punctuating his remarks with that little that had by then become a habit with him. Collie, you are a splendid example of inherited tradition. I remember your grandfather. He could never grasp the ablative absolute, a stupid fellow, your grandfather and your father too. I remember him, he used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either, but I do believe, my dear Collie, that you are the biggest fool of the lot. Roars of laughter. A great joke, this growing old, but a sad joke too, in a way, and as Chips sat by the fire with autumn gales rattling the windows, the waves of humor
and sadness swept over him very often until tears fell. So that when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither did Chips himself. अच्छा, ये मैंने चैप्टर की रीडिंग कर दी है फर्स्ट चैप्टर की। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ भी कर दूँ कि इस चैप्टर में हुआ क्या। जब हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स जब नॉवल ये शुरू होता है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ नॉवल, इट्स अ नोवेला। इस पे मैं एक और अलहदा से वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि इसमें फ़र्दर इसकी क्या डिटेल है। क्या डिफ़रेंस होता है नोवेला में और नॉवल में, क्या डिफ़रेंस है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, जब पहला चैप्टर शुरू होता है तो उसमें देखते हैं कि शुरू में मिस्टर चिप्स जो है वो बैठा हुआ है और वो फिर वो सोच रहा है अपने पास टाइम के बारे में। और हमें राइटर ये बताता है कि उस वक़्त वो कहाँ पे रह रहा होता है, वो मिसेस विकेट के घर में रह रहा होता है और वहीं पे वो साथ, अब उसका जो टाइम है उसको वो किस तरह से मेज़र करता है। वो स्कूल ब्रुकफ़ील्ड है और उसके सामने ही मिसेस विकेट का घर है, वहाँ रहता है और उसकी बेल टाइमिंग्स के साथ वो अपने टाइमिंग्स को लिंक कर लेते हैं। जैसे उसका सपर टाइम है, ब्रेकफ़ास्ट टाइम है, उसका लंच टाइम है, ये सारी चीज़ों को उनके साथ वो लिंक करता है और अपने टाइम को उनके अकॉर्डिंग मेज़र करता है, जो स्कूल की बेल टाइमिंग्स के साथ। और इसके साथ-साथ ही अच्छा, इसमें एक फ्रेज़ बार-बार यूज़ होता है, गेटिंग ऑन इन ईयर्स। ये ओल्ड एज को रिफ़र कर रहा है कि वो बूढ़ा तो हो गया है और उसकी थोड़ी-सी रूटीन भी हमें राइटर बताता है यहाँ पे। और फिर उसमें एक तो पहले चैप्टर में वो ये बात बताता है कि किस तरह से वो अपनी अपनी रूटीन को स्कूल की बेल टाइमिंग्स के साथ लिंक कर लेता है। फिर उसमें दिखाते हैं कि डॉक्टर हर 15 डेज़ के बाद वो जो है उसको विज़िट करता है उसका चेकअप करने के लिए, और उस ओल्ड एज में भी उसको एज़ सच उस तरह से कोई ख़ास या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ख़तरनाक हो या मोहलिक हो। हाँ, और डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम उस एज से गुज़र गए हो कि जब तुम्हें कोई बुरी बीमारी हो सकती है और तुम्हारी जो है हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी नेचुरल डेथ होगी। अच्छा, वो इसमें मज़ाक करता है और फिर बाद में ख़ैर वो मिसेस विकेट को कहता है कि आप इसका ख़्याल रखें ताकि उसको कोई चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह ना हो या इस तरह से, अदरवाइज़ उसको कोई बीमारी नहीं थी। एनोडोमिनी का भी इसमें ज़िक्र किया हुआ है, वो भी एडवांस स्टेज है, वो भी बुढ़ापे को रेफ़र कर रही है। और फिर इसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू बाय जॉब, इसमें उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग जो एक स्पेसिफिक एज है, जो एक मेजर्ड कह लें या एस्टिमेटेड एज है, वो 70 होती है। ठीक है। और जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स को कहते हैं, और ये यहाँ पे उन्होंने अपने उसके साथ लिंक किया हुआ है, रिलीजन के साथ। अच्छा, फिर और दूसरा हम ये कहते हैं कि उसमें और हमें वो ये बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, हमें क्यों याद रहता है वो कि मिस्टर चिप्स को जो है उसका जो इंटरव्यू हुआ था वो कब हुआ? इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है 1870। वो इस वजह से भी याद रहता है कि वो वॉर ईयर था और वो फ्रांस और जर्मन्स के ख़िलाफ़ वो उनकी आपस में जो वॉर हुई थी, इस वजह से उसको ये जो ईयर है वो ख़ास तौर पर याद है। अच्छा, अब इसमें और जिस दिन ये जो ईयर चल रहा है वो वॉर का ईयर है, और उसके साथ-साथ वेदर बाय ने जब उसको इंटरव्यू किया था वो ईयर भी 1870 था। और इसमें उन्होंने उस डे को भी डिस्क्राइब किया है कि वो दिन बहुत शानदार था और धूप चमक रही थी और बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम था और क्रिकेट हो रही थी, और इस तरह से बच्चे जो हैं दूसरे स्कूल से भी आके वो क्रिकेट खेल रहे थे ब्रुकफील्ड में। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ भी वो मेंशन कर देते हैं कि मेलबरी को उसने सबसे पहले जो मिस्टर चिप्स ने जहाँ पे जॉब की वो मेलबरी स्कूल था, और वो 1 साल के लिए उसने वहाँ की और उसको वो पसंद नहीं था और उसने उसको छोड़ दिया था। वो क्यों पसंद नहीं था? एक तो वो अपने डिसिप्लिन की वजह से, उसका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, और वो वैसे भी मिस्टर चिप्स वहाँ पे वो बहुत यंग था जब उसने मेलबरी जॉइन किया था, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो उसको बहुत तंग करते थे और इस वजह से मिस्टर चिप्स ने वो छोड़ दिया। और जब वेदर बाय ने उसको इंटरव्यू किया और उसने मिस्टर चिप्स को कहा कि मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, बहुत ही अच्छी नेचर का इंसान था, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ये टिप बताता हूँ कि तुम किस तरह से अपनी जॉब को स्टार्ट करो ब्रुकफील्ड में। ये है कि तुम पहले दिन से ही अपना बिहेवियर जो है वो फर्म रखो ताकि बच्चे तुम्हारा मजाक ना उड़ा सकें।
तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब वो जॉइन करता है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा राइटर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताता है कि वो इस तरह थे कि कैसे, तो यही चीज़ को ज़हन में रखते हुए उन्होंने इस तरह से किया। उनमें से एक बच्चे ने क्या किया, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए एक डेस्क का जो है लेड उसको उठाया या उसको शोर किया। तो मिस्टर चिप्स ने फ़ौरन ही उसको आइडेंटिफ़ाई किया और उनको उसको पनिश करके उसको 100 लाइनें जो हैं वो लिखने के लिए दे दी। और फिर इस तरह फिर वो एक और वो जो पहला बच्चा था उसका नाम जो था सर रिचर्ड बताया है उन्होंने नॉवल में। ठीक है, उसके बाद फ़र्दर हम बताएँ कि फिर उसमें मिस्टर चिप्स का एक तरीका था, वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल गए और बच्चे भी बहुत उनके साथ अटैच हो गए। फिर फ़र्दर उनकी जो नेचर है वो भी शुरू में बहुत सीरियस इंसान थे, बाद में थोड़े से वो उनकी नेचर जो थी वो जॉली हो गई और वो बहुत मज़ाक इस्तेमाल करते थे पढ़ाते हुए। फिर इसी तरह वो बताते हैं कि जब तुम्हारे फ़ोर फादर्स थे तो उनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं थी और फिर उन्होंने उसको नहीं सीखा, और मैंने जब तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर को पहले पनिश किया उस वक़्त उनको उसकी ज़रूरत थी, और अब उनकी जो अब सन आया है अब उसको भी उन्होंने पनिश किया और उनका इस सज़ा की तुम्हें अब ज़रूरत है। बस ये इसी तरह ही वो बच्चों को पढ़ाते थे और उनके साथ बातें करते थे और इस तरह से, लेकिन साथ ही फिर बच्चे भी उनकी नेचर को समझ गए थे और वो अ, उनके साथ बहुत अटैच होते जा रहे थे। फिर ये हुआ कि मिस्टर जो चिप्स हैं वो इसी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनके साथ बातें करते और अपने रूटीन को फॉलो करते। तो जो एंड में है, एंड में वो इसी तरह दिखा रहे हैं कि वो जो मिस्टर चिप्स थे वो फायर प्लेस के पास बैठे हुए हैं और फिर हवा चल रही है और ऑटम है, ख़ज़ां का मौसम है, और इसी तरह उनको पुरानी यादें जो हैं वो उनको याद आती हैं और यूँ लग रहा है कि वो जैसे रो रहे हैं, और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो रो रहे हैं या नहीं रो रहे। और मिसेस विकेट जब आई हैं वो भी उनको देखती हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो उदास है या खुश है या उसका क्या एक्सप्रेशन है। इवन कि ये मिस्टर चिप्स को खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो उनकी क्या फीलिंग है, वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, एंड नीदर डिड मिस्टर चिप्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।